Welcome to Divine Feminine Embodiment, and we are bringing in the essence of Hanuman Embodiment today. And with that, Manvi has a question of the question right now is that how do I bring in the stability in my business when like 90% of the time I feel unstable emotionally, energetically, physically. So, because I know that I am a person that's constant changing and I'm not same on every day, what if I take out time of 3 days or 5 days in a month and you can sync it with your cycle also, you know, because you know that maybe new moon is something where you'll feel more in the energy and identify that for yourself. Have a cycle calendar app on your phone and track your mood on that calendar for a month. And you'll be able to see that what are the days that I feel more harmoniously also balanced. Then I can take out that 3 to 5 days out um, because you are not feeling uh, that you have a right environment in your home. And I can take out these 3 to 5. मुझे ना पानी दे देना मुझे बहुत ज्यादा गर्मी प्यास लग रही है क्या कोकोनट वाटर तो नहीं क्या क्या कुछ नहीं but in those days I'll in advance decide before going in that this is gonna I'm gonna do. And maybe when I go, I can revisit that plan. These 5 days I'm gonna give to my business and make a very executable one-pager plan for next days. There are days which जब मेरे पास जैसे कल मैंने कुछ भी नहीं डाला था यूनिवर्स स्प्रिंग के लिए फिर मुझे खाना खाते टाइम याद आया कि मैंने कुछ भी नहीं डाला तो मैंने कहा चलो मैं स्टोरी डाल देती हूँ तो व्हेन आई हैव माय गुड डे आई गो फॉर अ लाइव व्हेन आई हैव a scheduled day where I feel okay, I go out in a cafe. Mondays and Tuesdays, I write my carousel content. Stories content मैं generally नहीं लिखती हूँ मैं तभी तभी लिखती हूँ but on my worst day I think this putting a story becomes for me and it could be different for other people most easy way and still stories are the best way to sell like because the people who are wanting to buy are really reading through those stories carousel become another thing but story feels like a one-on-one conversation to me. So I can write whatever going on in my head around that topic at that time. Sometimes, whenever that is not there, then I can simply take a carousel that I have made before and I'll put that only on story, part by part. So my 1, 2, 3, 4, 5 level of content deliveries, I'm lost again. Am I back? तो मैं गेट खोल देता हूँ. Yeah, I think if it's okay with you, we can all like turn off our videos so to support your bandwidth. नहीं मैं बाहर जा रही हूँ एक बार वो देखते हैं वरना मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा के बाद नहीं होता है तो फिर I can do that. That. Hmm. How does that sound to you? Do you have any questions? That sounds very good. Uh,
It brings some structure and some clarity on how I can manage my days. Otherwise, I was feeling very scattered. Hmm. Uh, yeah, yeah. This Now, sounds. नहीं, आप बोलो. you have managed your days in a month. Now, when you do that, the second step is to manage your energy in a day. And you will know that when do I feel more in control of my energy. बाबू मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है. लाइट ही नहीं आ रही, हम क्या करें? अच्छा, तुम्हारा चार्ज है क्या? मेरा लैपटॉप होगा. कोई नहीं. अच्छा, 10% है मेरा. मैं बताती हूँ तुम्हें, नहीं आती है तो. सो मैनेजिंग योर एनर्जी ना, in the morning, maybe like I used to not be a morning person before. मेरे लिए मेरा energy level used to come in night only. So I knew कि मैं after 6 ही कर पाऊंगी. Especially the time of 12 to 5 or 6, and hence working was in our job was very difficult for me क्योंकि वो active hours चाहिए होते थे और वो मेरे लिए most anxious hours होते थे. Like the heat itself, because my body temperature is also high. I generally feel so hot in the day that I'll be like mad, especially in a job like a structure. Because I'm like, मेरे को नहीं बात करनी किसी से. So now mostly I will just sleep off. And if I'm in a workshop on a space, तो वो energy अलग होता है. घर पर हूँ तो मैं 12 से 5 is my time to rest. But right now, during pregnancy, it changed. I don't feel as live in the night because I'm tired by the night. So I don't do any sessions in the night. पहले तो मेरे सारे sessions रात 9 बजे, वन ऑन वन मेरे 9 बजे के बाद होते थे. 9 से 10, 10:30. तो what I do now is, right now, I feel most in kind of control of my energy, where I feel more cleaner in the day, in the morning itself. So maybe when I wake up is a time when I can disconnect from my this inner reality, this outer home reality, or what's going on in my family or blah blah blah. That could be the time for you for 5 to 7 a.m., 7 a.m. to 9 a.m., and whatever that kind time could be for you. So taking that time out for yourself every day, because उसके बाद तो भसड़ शुरू हो जानी है. उस बजट में हमारे पास नहीं है कंट्रोल. नाश्ता बनते ही शुरू हो सकता है ना. तो हमें उसके पहले क्या वो वक्त निकाल सकते हैं. अगर वहां नहीं निकल रहा है, अगर वो मेरा बेस्ट टाइम ऑफ एनर्जी नहीं होता है, पहले तो क्या उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्योंकि वंस यू स्टार्ट गेटिंग दैट टाइम फॉर नरिशमेंट यू माइट मेक इट योर बेस्ट टाइम. नहीं हो सकता, देन मे बी इन इवनिंग आई गो आउट इन अ पार्क for 2 hours with my notebook and pen, take out that time for myself. So for me, like um, and that time could be something where I take a walk, breathe, write, bring my emotional stability, physical stability, maybe just 30 minutes or 20 minutes of stretching yoga, 20 minutes of stretching yoga, 10 minutes of meditation, then 30 minutes of me sitting with my work, strategizing, planning what can I do, and then 1 hour of actually creating it. Like these 2 hours that I put for myself in the starting of the day. So the most important thing, whatever is that for you, it could be health also, has to be the first thing to get done. My one thing of the day, there has to be one thing. ये तो मैंने पूरा रूटीन बता दिया. पर एक चीज जो मुझे करनी ही करनी है हर दिन, which could be me creating a video, which could be me writing something, which could be me जिस मैंने मैसेजेस लिख के रख दिए हैं और मुझे बस पूरे दिन में अलग अलग लोगों को भेज देना है ताकि वो मुझे रिस्पॉन्ड करे और मुझसे कंसल्टेशन बुक करें. वट एवर इज दैट फॉर यू.
My one thing that has to get done every day should be the first thing that I must get done with. So now I'm just bringing more, because I'm taking my energy back and I'm like really using it for myself before I start giving it out to people. Hmm. So now this is how I'll manage my energy in a day. So when you say it has to be the first thing to be get done, you are doing this in the time when you feel most in control of your energy, right? Yeah. And when you say that, no, स्पेशली बिकॉज अभी हमारा आउटर रियलिटी डिफाइन कर रही है उसको, तो हमें वो थोड़ा ऐसे निकालना पड़ेगा कि हम सच में अभी वो स्पेस है हमारे पास, मतलब जैसे मेरे लिए था, मैं वो शाम को ज्यादा लाइव फील करती हूँ। बट अभी मान लो अब घर में सुबह 9 बजे से शुरू हो जा रहा है टंडे जहाँ पे मेरी जरूरत है, तो मैं नहीं, शाम को इट बिकम्स द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम, तो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे वो मेडिटेशन डेवलप करना पड़ेगा कि मैं 7 से 9 के पहले कर लूँ वो, और Hmm. फिर मैं दैट बिकम्स माई प्रोडक्टिव आवर ऑल्सो। Yeah, yeah. वो दोनों ही, आउटर और इनर दोनों को एक लेके एक बैलेंस आवर निकालना पड़ेगा हमें, जहाँ पे हम आउटर भी और इनर भी दोनों कर सकते हैं। मेरे लिए आफ्टरनून में अगर मुझे काम करना है, मैं करती हूँ आफ्टरनून में काम, मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं एक अच्छे कैफे में जाके बैठूं, जहाँ पे मतलब एसी चल रहा है और देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन नाउ, एंड आई लाइक टू वर्क इन अ कैफे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट फील मोर क्रिएटिव इन राइटिंग एंड स्टफ। So that could be one option if you have that hour, afternoon hour only. Hmm. So for me, my mornings are very chaotic. Until lunch, it is very, very chaotic. आफ्टर लंच, बिटवीन लंच टू डिनर, वो जो शाम का टाइम होता है और जो रात का टाइम होता है, दैट्स व्हेन माय ब्रेन वर्क्स अ लॉट. Yeah. So what if you find that space, maybe outside your house, Hmm. where you can go for 2 hours, 3 hours, Hmm. do the work. Even if sometimes you don't want to do the work, you just sit, read something. Like Hmm. the, even in 2 hours also, when you manage the hour now, you have to also manage ki मैं वो आवर 2 hours में भी लाइक 90 मिनट्स कुड बी द माई मोस्ट फोकस टाइम। मैं कई बार नहीं जाती हूँ बाहर, ये सोची कि अरे यार, अभी जाऊंगी, अभी वापस आना होगा, तो मैंने अपने आप को दिया कि यार मैं अगर 90 मिनट्स के लिए भी जा पा रही हूँ ना, मैं विल गो, बिकॉज आई नीड दैट एटलीस्ट 90 मिनट्स टू बी एबल टू कम इन द मूड एंड देन डू थिंग्स एंड देन कम आउट। और उससे ज्यादा मुझे बैठना भी नहीं है, क्योंकि मैं जब बैठती हूँ तो मैं 6 6 घंटे बैठ जाते थे और फिर अगले दिन जाने का मन नहीं करता था, तो मैंने कहा कि नहीं, 90 मिनट्स ही करता है, क्योंकि मुझे उस टाइम रिदम जरूरी था। Hmm. अभी मेरे लिए ऐसा है कि मैं सिर्फ मंडे ट्यूसडे मेरे लिए मैंडेटरी है, बाकी दिन ऑप्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन द मूड। तो मंडे ट्यूसडे समटाइम्स इट्स 2 3 hours ऑल्सो, इट वर्क्स फॉर मी, एटलीस्ट 90 मिनट है वो। पर बाकी दिन फिर अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई हैव डन माई कंटेंट फॉर द वीक इन मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे I will get to Shakti. She makes the content, schedule it. Hmm. There is another challenge that I face, which is when I'm writing, creating content, I doubt myself a lot. Like, is this, will people understand what I'm reading? Will they get the message? Is this good enough? Will this bring me clients? This is not good enough. People write better. Look at her writing. It is much better than yours. Hmm. So stuff like that. And that also is a big resistance, like a block to overcome. Hmm. I get what you're saying. Um, what I feel is कि हम बहुत ज्यादा, वही परफेक्शनिज्म आ जाता है। बट मैंने साधना से भी बोला था लास्ट व्हेन वी टॉक्ड, दैट हमें कंटेंट रिविजन्स लिखने शुरू कर देने चाहिए, कि अभी जो मैं लिख रही हूँ ना, ये मेरा पॉइंट 1 है, देन मैं इसी को ही अगले दिन 2 दिन बाद दोबारा लिखूंगी।
in a different way, and it will become point two. Then I'll write it again. Same value I'm giving. I'm not changing also value, but I'll just give it differently. Point three. So I'm giving myself revisions to write about one piece of content in 10 to 30 different ways. दैट जस्ट थोड़ा सा प्रेशर वो रिलैक्स कर देता है कि मुझे पहली बार में अपनी बात बिल्कुल क्लियरली बता देनी है. And the other person who is also reading gets to read that value, really like take in the value in 10 to 30 posts of yours, and also become more and more clear about it. And they will take different value from same post every time, because the way we do, no, हम जिस इमोशनल स्टेट में होते हैं हम उसी हिसाब से उस कंटेंट को रिसीव कर पाते हैं. आज तो तुमने लिखा है ना, वो तुम्हारी ऑडियंस के लिए आज एक रिसीवेबल प्रोडक्ट है. कल जब तुम इसको दोबारा लिखोगे, मे बी कुछ भी चेंज नहीं करके भी डाल दोगे ना, तो भी वो कुछ और ही रिसीव करेंगे. Yeah. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई and I'm writing, when I write about one piece of content 10 to 20 different times, I'm actually improving my writing skills. I'm just finding and expanding my brain to think about one topic in 30 different ways. And that's how you also grow as somebody who's, writing their thoughts out. Change you rather than finding out a different content every time. I'm actually being creative in putting the same content in 30 different ways. And that actually grows and deepens and makes you more perfect in writing. Yeah. बाकी जो इम्प्रॉम्प्टू आ रहा है वो तो तुम लिखोगे, पर जो इम्प्रॉम्प्टू आ रहा है, ऐसा नहीं कि वन कंटेंट के 30 वर्जन एक साथ ही डाल देने ना. आज कुछ आया वो लिख दिया, कल कुछ आया वो लिख दिया, परसों कुछ आया वो लिख दिया, नरसों कुछ नहीं आ रहा है पहले वाले का ही दूसरा लिखा. आज एक पीस ऑफ ड्राफ्ट वन बना दिया, कल इसी कंटेंट को चलो ड्राफ्ट टू बनाते हैं. मैंने लिख लिए पहले से ही 5-6. So give yourself more chances, because you will always grow. Wherever you are, you will always grow from there. Well, Yeah. This actually really helps. It solves a lot of issues that I was struggling with, and I just like thought that yaar mujhse nahi hoga. Maybe there is some trick that other coaches know, because of which they're able to do it. I don't think I have it in me. I internalized it a lot, right. but this really helps. And will come to the Hanuman embodiment.